Welcome to Bhupal Search Career Point. This is a video on battery, that is primary cell. This video belongs to Unit 2 Electrochemistry. A video re ame battery primary cell kotha padhiba. What is a battery? A cell or a series of cells that we use is a source of electrical energy, where the chemical energy of the redox reaction is converted into electrical energy is called a battery. आम बैटेरी कहले कौन बुझा ना ये गोटे सेल हो पारे बा सीरीज ऑफ सेल हो पारे जोटा केमिकल एनर्जी रो रिडक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करी आमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जोगी थाए ए सेल और ए सीरीज ऑफ सेल्स दैट वी यूज एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी where the chemical energy of the redox reaction is converted into electrical energy is called a battery. Now, a battery to be practical use should be reasonably light, compact, and its voltage should not vary appreciably during the use. Practical use by battery टा light होगा दरकार, size रे compact होगा दरकार, एवं ता use समय रे ता voltage टा vary न होगा दरकार. There are mainly two types of batteries, such as primary cell and secondary cell. दि प्रकार बैटेरी अच्छे गोटे प्राइमरी सेल गोटे सेकेंडरी सेल आमे ए वीडियो रे प्राइमरी सेल कथा पढ़िबा आगामी वीडियो रे आमे सेकेंडरी सेल कथा स्टडी करिबा. लेट अस कम फॉर द प्राइमरी सेल. The cell in which the redox reaction occurs only once and after use over a period of time becomes dead and cannot be reused again. It is said to be a primary cell. जो सेल ले थोरोटिए मात्र रिडक्स रिएक्शन होता है एवं सही रिडक्स रिएक्शन रे केमिकल एनर्जी टा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो सारा पर आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम यूज भीतर से कन्वर्टेड हो एवं बिकम्स डेड. आफ्टर दैट इट कैन नॉट बी रीयूज आउ थरे तक व्यवहार कर जाई परिबो ना. सही प्रकार सेल को हमें प्राइमरी सेल बोले कहि था. एबे एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेल. The most familiar examples of primary cells are dry cell and mercury cell. Even नजर पकेगा हमें dry cell पर. The dry cell known as Leclanché Cell after its discovery, which is used commonly in our transistor and clocks. घंटा रिमोट इत्यादि रे ए बैटरी नॉर्मली भी यूज होता है. हमें डायग्राम पर नजर पकेगा गोटे कार्बन रड को कैथोड हिसाब रे यूज करा हिचे ताउपरे एवं जिंक रो कपटी को जेटा कंटेनर हिसाब रे काम करी थाए से एनोड हिसाब रे यूज हिचे. MnO2 कार्बन ब्लैक एंड अमोनियम क्लोराइड पेस्ट को हमें पेस्ट हिसाब रे यूज करिचो टू सेपरेट बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड. लेट अस कम फॉर द डिस्क्रिप्शन. द सेल consists of a zinc container that also acts as the anode, and the cathode is a carbon or graphite rod surrounded by a powder manganese dioxide and carbon. The space between the electrodes is filled by a moist paste of ammonium chloride and zinc chloride. मझिरे कार्बन बा ग्राफाइट इलेक्ट्रोड रहिला, जिंक कंटेनर रहिला. जिंक कंटेनर आउ ये भीतर थिबा स्पेस को माने ग्राफाइट इलेक्ट्रोड भीतर थिबा स्पेस को हमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड पेस्ट मोइस्ट पेस्ट द्वारा फिल करि थाउ. द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स बट दे कैन बी रिटेन approximately as follows. At anode, zinc loses 2 electrons and becomes Zn2 plus ion. At cathode, MnO2 NH4 plus gains 1 electron to give MnOH plus ammonia. In the reaction at cathode, manganese is reduced from +4 oxidation state to +3 oxidation state. Ammonia produced in the reaction forms a complex with Zn2 plus to give Zn ammonia whole power 2 plus. The cell is potential nearly 1.5 volt.
Even the okay, second cell mercury cell upare, which is normally used in the wristwatch. Look at the diagram. Then mercury cell, which is suitable for low current devices like hearing aids, watches, etc. Consists of zinc mercury amalgam as anode and paste of mercury oxide and carbon as the cathode. The electrolyte is a paste of potassium hydroxide and zinc oxide. The electrode reactions for the cell are given below. At anode, ZnAg plus 2OH minus gives us zinc oxide, water and 2 electrons. At cathode, these 2 electrons are gained by HgO and water to give Hg and 2OH minus. The overall reaction is represented by ZnHg plus HgO gives us ZnO solid plus Hg liquid. The cell potential is approximately 1.35 volt and remains constant during its life as the overall reaction does not involve any ion in solution whose concentration can change during its life. Thanks for watching Bhupal's Career Point. Please like and share this video if you are watching it for the first time.